तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 के S8 के बारे में कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज सैमसंग गैलेक्सी 8 के बारे में कि इसका फ्लिपकार्ट सस्ते में सेल हो रहा है जो सिर्फ 30,990 रुपये का है। और ये क्या काबिल ख़रीद है कि नहीं इसमें। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों मैं वीडियो ना मैं इंग्लिश में बात करूँगा इसमें, तो आप बस सुन लेना, बाद में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बाद में आप मैं उम्मीद है समझ जाएंगे आप बस। तो चलिए वीडियो ट्राई करते। द फ्लिपकार्ट मोबाइल्स Bonanza sale is offering the Samsung Galaxy S8 at discount price of Rs 30,990. The Galaxy S8 was Samsung 2017 flagship smartphone and is scheduled to get the Android Pie update very soon. The Galaxy S will impress with an eye-popping Super AMOLED display. The Galaxy S8 comes with a 2-year-old chipset. Samsung is scheduled to release the Android Pie update to Galaxy. If you are in the market for a flagship smartphone at any point of time in the year, a Samsung flagship will always be on your list. Samsung S series and Note series flagships have always been known to offer one of the best Android smartphone experience. The Galaxy S10, which will be Samsung flagship offering for 2019, will be official within a matter of few hours and is expected to carry a premium price tag. However, the older Galaxy S9 will keep selling alongside and will offer a more affordable option for consumers to own a fairly new flagship grade Galaxy S device. However, the Galaxy S9, despite a reduced price tag, will still demand a premium. So what about the Galaxy S8? Flipkart will be putting the Galaxy S8 on sale at heavily discount price of Rs 30,090, which is the lowest price at the Galaxy S8 has been since its launch in 2017 at Rs 13,990. It makes sense for many on a Samsung flagship without burning a hole in the pocket. But does it make sense to buy a smartphone that's 2 years old? That's what I am about to find out. The good Galaxy S8 will grab eyeballs. When the Galaxy S8 came out in 2017, it left the world dumbstruck with its curvy design and thin bezels. Critics as well as consumers applauded Samsung for offering a fresh design after many years. With the S8, the curved edge display, now christened Infinity display, had narrower bezels than its closest rival, the iPhone 7, with no home button in the front. The design was cleaner. Samsung pushed the fingerprint sensor to the back. दोस्तों ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि मेरी इंग्लिश आपको अच्छी लगी कि नहीं। और अगर आपको नई वीडियो देखनी तो बेल आइकन भी दबा दें कि आपको कोई नई अपडेट आप मिस ना कर पाए। मेरा नाम था यसन, आप देख रहे थे टेक न्यूज़। तो चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म।